Measures of central tendency. There are 5 measures of central tendency used for analyzing the data. Number 1, mode, median, mean, variance, standard deviation. चलिए हेडिंग डालें मोड. Mode is the most popular, most frequent, and most repetitive term. प्लीज चेक करें मोड क्या है इसके अंदर. मोड इज 1 साफ साफ नजर आ रहा है, राइट. In case of group data without class intervals, mode will be found as follows. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 2 की है, तो मोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. If the group data involves class intervals, instead of mode, we will get model class. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? बेटा सब फॉलो कर रहे हो? Do you all agree? Do you all realize? Do you all understand? सबको मोड अनग्रुप डेटा का, मोड ग्रुप डेटा विदाउट क्लास इंटरवल्स का, और मॉडल क्लास विद क्लास इंटरवल की क्लियर है सबको? मीडियन, median is the middle term when the data is arranged in ascending order. Median is the middle term achieved when the data is arranged in ascending order. And in order to calculate median, we will apply the formula n plus 1 upon 2th term in case of ungrouped data. Let's say this is the data arranged in ascending order. Seventeen terms and 17 plus 1 upon 2th term. Ninth term is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ninth term is 1. So median is 1.
इन केस ऑफ ग्रुप डेटा, अच्छा एक और चीज इससे पहले कि ग्रुप डेटा पे आऊं, लेट्स से डेटा होता 1 1 2 2 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन नंबर होता डेटा, तो 8 + 1/2 इज 4.5। 4.5 का मतलब याद है, एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। हमने स्टेम एंड लीफ में भी ये बात करी थी, याद है ना भाई सबको। तो एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, 1 2 3 4 5, इत्तेफाक से फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों टू हैं, तो 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इज, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इन केस ऑफ ग्रुप डेटा विद क्लास इंटरवल्स, इन केस ऑफ ग्रुप डेटा विदाउट क्लास इंटरवल्स, पहले इन केस ऑफ ग्रुप डेटा without class intervals, the formula to calculate median is sigma f plus 1 upon 2th term. Let's say ये डेटा है, सिग्मा एफ कितना है, 4 + 7 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, 16 + 5 21, 21 + 4 25, 13th टर्म। अब चेक करें 13th टर्म कहाँ आएगी। 4 + 7 इज 11, 11 + 3 इज 14, 13th टर्म 14 से छोटी है और 11 से बड़ी है, तो मीडियन क्या हो जाएगा? आर यू ऑल विद मी? यू नीड टू आइडेंटिफाई किस रेंज के अंदर टर्म लाया कर रही है, ठीक है। 4 + 7 इज 11, 11 + 3 इज 14, 13th टर्म 14 से छोटी है, 11 से बड़ी है, तो 14 से 11th टर्म यहां तक आ रही है, 14th टर्म यहां तक आ रही है, तो इसका मतलब यहां लाया कर रहे हैं। वी ऑल एग्री? मीडियन क्लास, if the group data involves class intervals instead of median, we will achieve median class. सिग्मा एफ कितना है भाई? 20 + 1/2th टर्म। अच्छा, ग्रुप डेटा के अंदर अगर 10.5 आ रहा है तो इसका मतलब होता है 11th टर्म। ग्रुप डेटा के अंदर 10.5 का मतलब एवरेज नहीं होता। ग्रुप डेटा के अंदर कोई चीज 0.5 आ जाए तो वो नेक्स्ट टर्म बन जाती है, याद रहेगी बात। अनग्रुप डेटा के अंदर 0.5 आता है या 0.25 आता है तो 0.75 आता है, तो हम बोलते हैं एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग एंड प्रोसीडिंग टर्म। बट इफ इन ग्रुप डेटा 0.5 comes, it means we'll go to the next term, we will round it off. Am I clear? So 11th टर्म कहाँ आएगी? 4 + 2 6, 6 + 5 11, तो 11th टर्म यहाँ पे आ रही है, x lies between 5 and 7. This is the median class. और है जी, अगला पैराग्राफ लिखिए। If the group data involves class intervals, if the group data involves class intervals and the question insists on finding median rather than median class, ये ग्रुप डेटा है विद क्लास इंटरवल्स है, मैंने मीडियन क्लास निकाली, सवाल बोलता है नहीं भाई मीडियन क्लास नहीं चाहिए, मीडियन ही चाहिए, then then we will first make cumulative frequency curve and then
फाइंड मीडियन फ्रॉम इट। याद है ना, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मीडियन निकालने का तरीका सीखा था, 50% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो अगर सवाल जिद करे नहीं भाई मीडियन क्लास नहीं, मीडियन ही चाहिए, तो पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं, फिर 50% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मीडियन निकाल। आर यू ऑल विद मी? Mean is the average of all the data. In case of ungrouped data, in case of ungrouped data, the formula to calculate mean is sigma x upon n. Sum of all terms divided by number of terms. Let's say ये डेटा है, हमें मीन निकालना है। Sum of all terms 0 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1 plus 1 plus 5 plus 0 plus 2 plus 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 1 plus 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आर यू ऑल विद मी? In case of group data, the formula will be sigma fx upon sigma f. In case of group data, the formula will be sigma fx upon sigma f. आप एक कॉलम ऐड करेंगे fx का। आई वांट एवरीवन्स कंसंट्रेशन ऑन द स्क्रीन। 0 into 5 0, 3 into 1 3, 2 into 4 8, 7 into 3 21, 8 5। sigma fx upon sigma f। Am I clear? Copy. If the group data involves class intervals, then x will be midpoint of the class. Then x will be midpoint of the class. Thus, we will first find x. Thus, we will first find x and then apply the formula sigma fx upon sigma f.
लेट्स से ये डेटा है, पहला काम आप एक्स निकालें। एक्स क्या है? मिड पॉइंट है। एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2 इज 7 + 10 divided by 2 is 10 + 15 divided by 2 is 'Are you all with me?' Mean is also represented by x bar. Mean is also represented by x bar. Variance. Variance indicates by how much does the data vary from the mean. The formula to calculate variance in case of ungrouped data is sigma x square upon n minus mean का square. लेट्स से ये डेटा है और आपको उसका वेरिएंस निकालना है। So 1 square plus 1 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square upon n minus mean का square. Mean do you all agree? सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब होता है हर वैल्यू को स्क्वायर करो और फिर ऐड करो। पहले स्क्वायर करो फिर ऐड करो। In case of group data, we use the formula sigma fx square upon sigma f minus mean का square.
वेरिएंस के लिए सारे कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। आपको एफ एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा, एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा। 0 into 3 0, 1 into 5 5, 2 into 4 8, 3 into 6 18, 4 into 2 8, 5 1 5। 0 square, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square। डू यू ऑल अग्री? एफ एक्स स्क्वायर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 0, 5 into 1, 4 into 4, 6 into 9, 2 into 16, 25। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस मीन का स्क्वायर, सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ द होल थिंग स्क्वायर। 132 अपॉन 21 माइनस 44 अपॉन 21 स्क्वायर। 1.896। अब हमें इसमें एक्स का कॉलम ऐड करना पड़ेगा, एफ एक्स का ऐड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का ऐड करना पड़ेगा, एफ एक्स स्क्वायर का ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्लास इंटरवल्स होंगी तो मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स विल बी एक्स। आर यू ऑल विद मी? 0 + 3 ÷ 2 1.5, 3 + 5 ÷ 2 is 4, 5 + 9 ÷ 2 is 7, 9 + 12 ÷ 2 is 10.5। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 2.25, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 10.5 का स्क्वायर 110.25। आर यू ऑल विद मी बेटा? 4 + 3 + 5 + 6 + 2। बेटा आप लोग भी साथ साथ कैलकुलेशन करें, जस्ट इन केस मैं कोई गलत कैलकुलेशन कर लूं।
सो पहले एक्स बार निकालने, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एम आई क्लियर एवरीवन? Standard deviation indicates by how much does the data deviates from the mean. Standard deviation is under root of variance. तो ऊपर हमने जितने भी सवाल किए वेरिएंस के, सबके स्टैंडर्ड डिविएशन आ सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2। एम आई क्लियर एवरीवन? प्लस माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन अज्यूम्ड होता है कि दोनों तरफ हो।